हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो आप लोग? हेड्रा 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 हेड्रा। कोई नहीं आया, हेड्रा आया है। क्या बात है? हाय मून इस टाइम। यस, आ गए। एक सेकेंड। हाँ जी। कहाँ गया? गेंशन बंद है क्या? गेंशन पैक खुला तो है। क्या दिक्कत हो गई इसको? ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिखा रहा है? अरे यार, बंद करके ऑन करना पड़ेगा। रुको एक सेकेंड। ये भी कट करना पड़ा मुझे भाई। क्या दिक्कत है इसको? अभी पट्टी आ गया, आ गया, आ गया, ओ आ गया भाई। आवाज़ आ रही? पहले बताओ मुझे। आवाज़ 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 आ रही? हेलो हेलो। चलो चलो चलो। न्यू थंबनेल। हाँ, आज न्यू कैरेक्टर निकाले क्या? यस। थोड़ा टाइम लगता मैम आने। ओके, कोई बात नहीं एड्रा। मेरी दोस्त की प्रॉब्लम कुछ है, प्लीज़ बताओ। उसकी जीएफ उसको बदनाम करती है। बोलो मैम प्लीज़, रो रहा हो। प्लीज़, मेरा भी आपने ही सॉल्व किया था, उसको भी कुछ बोलो। मैं एक मैसेज डालता हूँ तब बोलिए मैम। ओके ओके ओके, तभी बोलेंगे। क्या बोलूँ यार मैं? जिया बदनाम कर रही है। हेलो निर्मन, वेलकम टू द स्ट्रीम। निर्मन यादव। अरे यार सॉरी, घर पहुँच के बर्ड्स लाना भूल गए। ओके, बर्ड्स भूल गए, बर्ड्स। ये बर्ड्स।
चलो आगे। अरे ऐसे ही कहाँ भूल के आ गए ईयरबड्स। मैं क्या बोल सकती हूँ गर्लफ्रेंड के बारे में, बताओ। गलती दो तरफ से हो सकती है भाई, क्या बोलूँ। आने तो दो, आने के बाद बोलो बोला बेचारा फिर। हाँ चल, किसकी क्या गलती है हमको क्या पता। हमको क्या पता है, किसी के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। जाने वाले तो चले जाते हैं, बिन बताए भी जा सकते हैं, कुछ गलती बता कर ही जाते हैं। लेट कर लिया। चलो हम अपना काम कर लेते हैं। आ गई जिलोटे। ओ भाई कलरफुल, कलरफुल है ये तो, कलरफुल। इसके साथ ये दिया है इसने, चोरी। अब चलो निकालते हैं अपन। चलो निकलेगा हमको या नहीं, चलो शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाह। ऐसा निकल जाए मुझे। एक ही पुल में निकल जाए तो बढ़िया है बेटी। अरे ये बैक नहीं हो रहा है ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा। ये जल्दी बैक नहीं हो रहा है। क्या निकला है, बुक ही निकली होगी और क्या। शुरू में तो सड़ा ही देगा ये। कैरेक्टर तो नहीं निकला होगा। अच्छा ये निकला है, वेपन। ड्रैगन, ड्रैगन बेन। निकल जा अच्छा सा कुछ। C1 हो गई मेरे, C1। ओ भाई साहब, C3 हो गया शायद ये। R2, C3 बोल रही मैं, स्किप करेंगे। ओ भाई ये निकल आया, छोटा सा चंगलू मंगलू। मिल जा भाई, जल्दी निकलता नहीं है। तड़पा तड़पा के, तरसा तरसा के देता है। दे देना, अभी बन जाए, बच जाएगी मेरे नाहिदा के लिए भाई। ओह फोर स्टार, फोर स्टार।
हाय निकल जा रही। बुक निकली है इसकी, कोई बात नहीं। हाय किस्मत मेरी। अरे भाई साहब निकल जाना। कितना खाएगी और कभी नहीं। ओ भाई साहब, कितने हो गए मैं पे? ये 2 थे शायद मैं पे। ये सी, हाँ नहीं था मेरे पे, सही है। चलो कोई ना। निकल जा प्लीज़, इस बार तो निकल जा। ज़्यादा खर्चा ना हो मेरा, ना ही तो निकालना इसके बाद फिर। प्लीज़ निकल जा। नहीं निकली। अब क्या मिला है? ओ फिर से कोली। तन्हा जिया ना जाए। प्लीज प्लीज निकल जाओ। प्लीज निकल जाओ। निकल गई। Oh my God! आ गई। टड़ा। उश, C3 हो गए मेरे पे। C2 हो गए। ओ चक्कर आ रही। एक सेकंड। ओ हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? अरे मुझे
चक्कर बहुत तेज़ आ रहे हैं भाई। मैं हॉस्पिटल जाके आती हूँ। मैं बस सडनली उठ गई यहाँ से चक्कर आती ही। अब मैं हॉस्पिटल जाके आने के बाद में फिर लाइव करूँगी। जब तक के लिए बाय।
to befriend them. Cause them no harm. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from 𝙒𝙀𝙀 has an enduring aftertaste. In 𝙒𝙀𝙧𝘗, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. हेलो हाँ जी आवाज आ रही मेरी आ रही है एडा आवाज आ रही है बताओ अरे यार ये क्या दिमाग खराब हो जाता है वॉइस चेंजर ऐसे ऑन रहता है ना अभी स्टार्ट कर दिया तो आ गया वॉइस चेंजर इसको क्या दिक्कत हो रही है मेरे समझ में नहीं आता ये एरो उधर चला जाता है हाँ जी ओ भाई वॉइस चेंजर हाँ अब हट गया वॉइस चेंजर बताओ आ रही आवाज क्या हुआ था गुड़िया को अरे वॉइस चेंजर है ही आ रही बट बस आ रही तो बस अरे कुछ नहीं है ड्रा घर वालों ने कुछ काम के लिए बुलाया था इसे काम के लिए हट गया अभी चलो बढ़िया अच्छी बात है हट गया चलो Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them.
यहाँ से जल्दी से लाइक दे दो गाइस, लाइक करो। अरे मुझे ये निकल गई देखो, जैसे ये निकली उसके बाद मुझे चक्कर आ गया। भाई खुशी 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 को फील करने दिया ही नहीं इसने, बोला कि चल जा अभी, बहुत हो गया, निकाल लिया ना तूने। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। पता नहीं लॉग आउट हो गया था, लॉग आउट मतलब ये हो गया था। ये देखो मेरी जीलोनैन बोलो, छिलोनैन बोलो, चेनन बोलो, जीलोनैन जीलोनैन। डरा देती है तू तो। कहाँ डराया मैंने, किसी को नहीं डराया। और कैसे खाना वाना हो गया आप लोग का? ये देखो कौन है मेरे पेश। अरे थे मैं ये करना है, इसको साउंड नहीं बढ़ाया मैंने, साउंड बढ़ाएंगे साउंड। मैं पहले घड़ी पे क्यों क्लिक करती हूँ हर बार, सीधा घड़ी पे जाती मैं, घड़ी पे। चलो पहले इसका सुनेंगे फिर इसके बाद कम कर देंगे वॉइस, ठीक है? मैं अंदर से जाके ज़रा चेक करके आती हूँ क्या दिक्कत हो रही है इसको। भाई इसके पेट में क्या दर्द हो रहा है, ये बताओ मुझे। इसके पेट में दर्द हो रहा है क्या? मुझसे क्या प्रॉब्लम है इसको? बार बार लॉग आउट क्यों, मतलब स्क्रीन क्यों बार बार बंद हो जा रही मेरी? स्ट्रीम ऑफ क्यों कर दे रहा है? मेरी स्ट्रीम क्यों ऑफ हो रही है बार बार? क्या दिक्कत है इसको? क्या किया, क्या बिगाड़ा मैंने यूट्यूब का? क्या दिक्कत है भाई यूट्यूब तेरी तो, तेरी नाक में रस्सी। करना क्या चाहता है? स्ट्रीम मेरी बार बार बंद किए दे रहा है, बार बार बंद किए दे रहा है। शर्म नहीं आ रही तुझको जरी भी? अरे सर में दर्द है इससे, इसलिए सर घूम जाता है इसका कई बार, इसलिए बंद कर देती है स्ट्रीम। नहीं कभी नहीं होता मुझे इतना ऐसा, मतलब कभी नहीं हुआ है कि चक्कर एकदम से आ गई हो। मतलब बहुत सालों पहले हुआ था ऐसा, कितने साल ऐसे चक्कर आए थे मुझे। मैं टाइम से खा लेती हूँ पता है। ओ भाई साहब क्या बात है। क्यूटी की वॉक देखेंगे हम तो, यही करते हैं बस। न्यू कैरेक्टर मिला तो खत्म, इसको वॉक कराते हैं। कैट वॉक इंस्टा पे। ये कुछ खाना चाहता है जो मैंने, ये कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? क्या? ठीक है। जिंदगी एक सफर है सुहाना,
बाद में हो जाएगी। अरे रे कोई ना। ला 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 ला। अब तो यही बैठना पड़ेगा सोने तक। काम कल करना होगा शायद। कौन सा काम? आपका कौन सा काम है? हे निर्मल वाच, कौन सा काम है आपका? मैं तो बताओ कौन सा काम? कुछ काम है तो बता दो। My potted plant on the porch has died again. चले जाओ काम करने के लिए। कोई बात नहीं। Don't tell me I overdid it this time. स्ट्रीम तो पड़े रहेगी, बाद में भी देख ले सकते हो आप थोड़ी देर से। जब मैं बंद करके चली जाऊंगी तब देख लेना, मॉर्निंग में देख लेना। काम नहीं रुकना चाहिए, काम तो करना चाहिए। जैसे हैड्रा करता है ना, स्ट्रीम चलती रहती है, आवाज़ सुनते रहता है, आवाज़ नहीं आई थी तो बोलता है कि क्या कर रही है, आवाज़ नहीं आ रही। स्ट्रीम चलते रहती है, इधर पढ़ते रहता है। कॉलेज का अच्छा प्रैक्टिकल फाइल करो करो, हैड्रा की तरह कर दो। इधर ऑन रख दो स्ट्रीम, इधर करते बैठो। We should take a break after all that running around. Yeah, let's rest here for a bit. Perfect weather for a nap in the workshop. और बताओ। अरे काम नहीं रुकना चाहिए, काम जारी रहेगा। चल दिखा कुछ नया। हाँ वही तो देख रही हूँ मैं, नया अभी ना, नया मतलब इसकी क्वेस्ट भी है अभी। वाओ, इसकी पूरी स्टोरी है अभी, स्टोरी है इसकी। आज थोड़ी करूँगी स्टोरी, कल थोड़ी करूँगी, थोड़ी थोड़ी, पूरी नहीं कर पाऊँगी ना। मैं तो ये देख रही हूँ उसकी कैट वॉक, क्या प्यारी लग रही है रे। हाय हाय हाय, क्यूटी पाई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मून, क्या मून चिल्ला के दिखा एक बार, चिल्ला के या चला के। हाय क्यूटी पाई, क्या बात है, क्या बात है। बहुत प्यारी है ये तो ना। इसकी दुम भी है पीछे, ये देखो पीछे दुम। बारे भाई साहब, खतरनाक सा ड्रेस है इसका। क्यूटी है, बहुत क्यूटी है। देखो आइज देखो इसके, भाई साहब ग्रीन आइज, शैतानी नहीं, शैतानी नहीं, बहुत क्यूट लगती है ना ग्रीन आइज में। हाय, अच्छी लग रही है। इसके नखरे भी कम नहीं है क्यूटी के। चलो हम इसको लेवल अप करेंगे इसको।
क्यूटी पाई को लेवल अप करेंगे हम। चलो लेवल अप लेवल अप। मेरा उसमें मुश्किल हो जाएगा, थोड़े मेरे पैसे कम पड़ जाएंगे आई थिंक सो। बता नहीं सकते, ये चाहिए मुझे भी। इसको दनादन ठोकना पड़ेगा जाके। अरे ये खोलना है मुझे। ओए हाय हाय, ये तो बताया नहीं इसमें। ये लगेंगे हमको। गलत बात है ना ये। यहाँ से जाना पड़ेगा अंदर, फिर ये खोलना पड़ेगा, फिर इसको मारना पड़ेगा। गलत सीन हो गया। नखरे इन सब से ज्यादा है मेरे। अच्छा जी, आपके ज्यादा है नखरे। कोई बात नहीं, ये नखरे वाली। The campaign begins. ये भी नखरे वाली है, क्यूटी पाई। हाय हाय। You want me on your team? Yes. Any problem? I'll bring my seasonings. Yes. इसको खोलना है, जाके नेविगेट करेंगे। किधर से हो गया रास्ता? रास्ता किधर किधर जाना है हमको, अंदर जाना है लग रहा है भाई साहब। ज़रूरी है मारना तो है। भाई झूले का याद आ रहा है मुझे, पता है पेट में ऐसा फील हो रहा था जैसे उतर रहा था झूला नीचे। माय गॉड। ये खोलना है टेलीपोर्ट यहाँ पे। ऐसा लगा मेरी जान ही निकल गई है। खतरनाक, एक से एक खतरनाक झूला था। मैंने सारे झूले झूले। बहुत मज़ा आई, बहुत मज़ा आई भाई। वाओ, पानी बहता। मुझे जैसे पानी को देखते ही इतनी खुशी हो जाती है, पता नहीं क्यों। अच्छा लगता है। चलो इधर उधर क्यों भाग रहा है? ये क्या नया है अब इसका? ओ भाई साहब, अगर दूसरा रहता तो मैं चढ़ सकती थी इसके पर। मेरे ऊपर चढ़ने वाला नहीं है ना। मुझको जला रहा है ये। अटैक! अटैक! Inazuma shines eternal.
कैसे चिल्लाती है ये नाविया। अटैक। जल्दी चेंज हो जा भाई साहब। यार ये यही नहीं तोड़ पा रही मैं ना। मर जा कमीने कुत्ते के पिल्लो। मर गया पिल्लोस। हेलो मोहम्मद राफे, वेलकम टू द स्ट्रीम। मोहम्मद राफे कैसे हो? मून मैंने बीजीएमआई किया पर सब हाँ सब धो के चले जाते हैं। धो के चले जाते हैं, झाड़ू सरफ लेकर धो के चले जाते हैं आपको। उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओनली टीडीएम खेलो, डायरेक्ट आप मत खेलो। टीडीएम खेलते रहो। प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो जब मैचेस लगा लेना दूसरे वाले। ओनली टीडीएम मैच लगाना, दूसरा खेलना ही नहीं। 1 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं खेलना। इसीलिए 1-2 दिन में ही खेलता हूँ, वो भी टीडीएम बस। हाँ 1-2 दिन नहीं, डेली खेलो। डेली 4-5 टीडीएम खेलो बस, इससे ज़्यादा नहीं। डेली खेलते खेलते 1 महीने तक खेलो बस। उसके बाद आपका हाथ सेट हो जाएगा, फिर आप खेल पाओगे अच्छे से। मैंने कुछ भेजा था दोस्त का। हाँ अरे हाँ याद आया। पिछले आते हैं तब लगता है ना वैसे। क्या पिछले आते? क्या पिछले आते हैं, समझी नहीं मैं। ये हमको कितने चाहिए थे? टीडीएम में भी बहुत मारते हैं मुझे। अरे नहीं, आपके लेवल के ही होते हैं वो। स्टार्टिंग में जैसे आते हैं ना वही लेवल के होते हैं बंदे। वो लोग के भी नहीं आता खेलने जो आते हैं। इजी है यार। अरे झूले की तरह रही थी ना कि पेट में अजीब सा लगता है। अरे हाँ झूले में ना मैं सारे झूले बैठी थी, मतलब उसमें ना वही क्या बताओ क्या ही सीन था झूलों का। तो खतरनाक समझो, खतरनाक से भी खतरनाक। अजीब सा होता है जब झूला उतरता है ना। रोलर कोस्टर की तो बात ही अजीब है, खतरनाक वाला है वो तो रोलर कोस्टर। जब वो रिवर्स गया तो मैं समझी नीचे गिर गई मैं।
रोलर कोस्टर से मैं नीचे गिर गई समझे। वो लोग वीडियोस और बोल रहे थे लेने के लिए, मैंने फिर लास्ट में हम लोग भूल गए। आने के लिए इवेंट, कुछ दशहरा इवेंट वो लोग रखे थे ना, तो आने के लिए हम लोग को देर हो गया, वीडियोस लेना भूल गए रोलर कोस्टर के। बहुत बढ़िया थे वीडियोस भी, मैंने डाले थे थोड़े जो भी लिए थे झूलों के। और दूसरे, मैं जब झूले में बैठी थी तब दूसरों ने लिया था, दूसरे मतलब फैमिली वाले, तो बहुत अच्छा लगा था भाई। बहुत एकदम खतरनाक रोलर कोस्टर। तो फिर दोबारा बैठने के लिए भाई मैं बोली नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगी, बस हो गया मुझे। मेरी रिक्वेस्ट लेगी क्या बीजीएमआई में? क्यों नहीं लेंगे, कैसी बातें कर रहे हो नीरबन? और तो है, अब मारेंगे। कहाँ गई वो? येलो बाल ढूंढने पड़ेंगे अभी इन लोगों में से हमको। क्या है रे ये, खतरनाक स्केटिंग करती है, देखो तो, क्यूटी क्यूटी। ओ भाई प्यारी है ना, प्यारी परी। चलो हाँ, मैं तो इसका लेवल अप ही करने पे हूँ। लेवल अप करेंगे और 50 हो गया। और ये 3 चाहिए, इसको देते ही जाना पड़ेगा, मारते ही जाना पड़ेगा वहाँ जाके हमको। इसको 3 चाहिए ये वाले। देखो बजा रही है डीजे वाले, तेरा गाना तो बजा दे। हाँ जी समझ गया, बहुत डर गई थी रोलर कोस्टर पे। यस, डर तो लगता है ये भाई, गिर जाऊंगी इसलिए वो डर था मुझे, पता है। हाय, असल क्या था मालूम, कपड़े गीले थे, हम लोग पानी में से डूब के आए थे, डुबकी मार के पानी में, तो मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी। गीले कपड़े थे, गीले कपड़ों से बिल्कुल भी रोलर कोस्टर में बैठना नहीं चाहिए। थोड़े थोड़े सूखे थे लेकिन चिकने होते हैं ना कपड़े, वो सैटिन के होते हैं, तो जाहिर सी बात है गिरने का डर रहता है चिकने कपड़ों से फिसलने का। The show begins. Time to shine. एक गाना बजा रहा है। This one's got your name on it. Proper send down. From this teamwork is dreamwork. Watch out. Shine down. Inazuma shines eternal. Let the world fly. Hey there. A proper send down. From the Stina with love. Go in. अरे 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 अरे, टाइम प्लीज। आप ऊपर गए ना, नखरे दिखा रहे हैं हमको। नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। ओ भाई, Problem. Hey there. May I उसकी present? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है, हमारी गलती है, हम उसके पास आए ना। Coming at ya. Illusion shattered. Let's light it up. Torn to oblivion. Fire. With rock. Time to shine. मर जा पिल्लोस।
ओ कुत्ते के पीछे कहाँ भाग रहा है? There is no escape. गाना भी बजा रहा है, भाग रहा भी है। Hey there. अरे यार फिर से ऊपर चढ़ गया है। Strike a pose. मैं तो छिप गई इसके पीछे। No. अरे यार नहीं। तोबा सारा मूड खराब कर दिया। Inazuma shines eternal. Shine down. Go in. पत्थर के पास खड़ी थी ना मैं। अरे बार बार अब यही दबता रहेगा। देखो सेंसी जरा हाई है, इसकी कम करना पड़ेगा। Shower me with praise. Let my name echo some. There is no escape. अरे हो गई बाबा, गलती हो गई, क्या करूँ अब मैं। अबे तेरी भैंस। How brilliant! Shine down. Now you shall perish. Let's light it up. Everybody stand back. Illusion shattered. एक मर गया तो कितना फर्क पड़ रहा है ना, एक कैरेक्टर गया तो। फिर भी एक कम पड़ गया, बताओ। फिर वापस आना पड़ेगा हमको इसको मारने के लिए। डबल जियो लगा के आएंगे चलो। लेकिन हमारी लेवल अब तो है ही नहीं अभी। अनारकली मून, तू छोटी डोरेमोन है। छोटी डोरेमोन। अरे यार ये क्या बताऊं, ये मर गई। इतनी छोटी डोरेमोन, इतनी छोटी, इतनी छोटी डोरेमोन। डोरेमोन डोरी डोरी डोरा डोरारा डोरारा डोरा डोरा डोरारा। मेरे लिए क्या है, बादाम पिस्ता। यम्मी। खाओ खेलो। मन करता है तेरे सर पे टपली मार के भाग जाओ पर तू रोने लग जाएगी ना। नहीं मैं रोऊंगी ना, मैं भी टपली मारूंगी वापस से। मैं भी पीटूंगी। Being too popular can be such a hassle. पिस्ता मैं भी खाऊंगा। Who knew खाओ that खाओ। people would adore me so नमकीन much? वाले पिस्ते, नमकीन पिस्ता। नमकीन नमकीन नमकीन। ये देखो इसको मारते ही फूल जाता है। इसको पानी में भी ढकल देंगे हम मार मार के। चल जा, चल पानी में तैर के आ। इसको देखो क्या
क्या बन के तैर रहा है। गुब्बारा बना दिया मैंने इसको। वो बादाम तो अच्छे नहीं लगते, पिस्ता ही अच्छा लगता है। बादाम अच्छे होते हैं बादाम, हार्ट पेशेंट्स को दे सकते हैं बादाम। May I present? तो बादाम अच्छे हैं। ये देखो, ये निर्मल है क्या? सो गया भाई पानी में। इसके ऊपर चिड़िया भी आके बैठ गई। ये देखो गुब्बारा फुला दिया मैंने इसका। भाई गेम में मज़े नहीं किया तो और क्या किया बताओ। गेम खेलो तो मज़े से खेलो, नहीं तो खेलो ही नहीं गेम। चलो फिर जाके धुलाई करना है। बादाम खाया करो, अच्छा होता है बादाम। अरे मैंने क्या बोला था, डबल लगाने के लिए बोला था ना, 𝙙𝙤𝘼𝙧। लेकिन मैं उसका लेवल अप ही नहीं है, कैसे लगाऊं मैं? ये लगा सकती हूँ, ये भी लगा सकती हूँ। आबरा का डाबरा। This world is full of unsolved mysteries. इसको लगा के देखेंगे एक बार। चलो, मैंने ट्रैवलर को यूज़ ही नहीं किया। The show begins. Let the world fly. There is no escape. Coming at ya. Feeling lucky? Inazuma shines eternal. Yoo-hoo! शिफ्ट हो जा। Hey there! Attack! That's the lightning echoing song. खतरनाक है भाई ये तो। Fellow warfare, I guess. Coming at ya. Shine down. Quake! अरे नहीं मानना था, मैंने इसको Hey there! ऐसे यूज़ कर लिया। How brilliant! Illusion shattered. Coming at ya. Feeling lucky? Ah. Torn to oblivion. कमीना। A proper send-off from the Tina with love. Terra Smash! Hey there! Fellow warfare. किसी ना किसी की चीज़ की कमी रहती है। जो भी करो आप। Let the world fly. May I present? पिल्लोस तेरी तो जिधर जा रही हूँ उधर मार रहा है। This is trouble. नहीं। Am I? ओ भाई गलती कर दी मैंने। Coming at ya. Proper send-off from the Tina with love. Now you shall perish. Illusion shattered. Coming at ya. That's enough. अरे भाई इसको मार दिया, बताओ।
क्वीन को मार दिया इसने, क्वीन को। ला 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 ला। मैंने स्क्वाड बनाई थी CPL निकालने के लिए, और कॉलेज वाले कह रहे हैं कि मोबाइल गेम्स नहीं होंगे। मोबाइल गेम्स इसलिए नहीं होने देंगे वो, क्योंकि मोबाइल से ख़राब हो रहे ना बच्चे आजकल, इसलिए मोबाइल गेम्स नहीं होने देंगे। अब जिसके पास मोबाइल नहीं होगा तो फिर वो लोग माँ बाप फिर उन लोग को दिलाना पड़ेगा, बच्चे जिद करेंगे, कंपटीशन है, अच्छा फ़ोन दिलाओ, ऐसा वैसा। तो नहीं दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे। और पिछली बार भी तो हुए थे, पिछली बार हुए थे। वो ले लिया होगा, कोरोना का ज़माना था ना। कोरोना का ज़माना। ला ला I'll bring my seasonings. कोरोना का ज़माना था। May I present? अरे वैसे स्पोर्ट भी तो होंगे ना। नहीं, ये लोग अलाउ नहीं करेंगे, कॉलेज वाले ऐसे ही है, लोग नहीं करते अलाउ। How brilliant! There is no escape. Proper send off from the 𝙙𝙤𝙀𝘆𝙀𝘆. वो लोग भी मोबाइल चलाते हैं, लेकिन वो लोग भी अलाउ नहीं करते, बताओ। Inazuma shines eternal. Shower me with praise. Time to shine. Illusion shattered. Watch out. You're toast. अबे अबे अबे, For me today. जल्दी नहीं शिफ्ट होता है ये दिक्कत है मुझको। Shine down. A proper send down from the 𝙙𝙤𝙀𝘆𝙀𝘆. May I present? How dare you! There is no escape. Torn to oblivion. Boba, get them! Race you! Let the world collide! Nice and spicy. Coming at you. Aha! Illusion shattered. कुत्ते के पिल्लोस, रुक जा जरा। Into the fire. तेरी तो। Hey there! This one's got your name. अरे अरे अरे, क्यों चला रही है भाई, क्यों चला रही है? अरे चलो भाई। Time to shine. There is no escape. Inazuma shines eternal. Proper send off from the 𝙙𝙤𝙀𝘆𝙀𝘆. Nice and spicy. Illusion shattered. And watch out!
अरे यार फिर से लगा दे कमीने को। मैं लगाने देना नहीं चाह रही थी इसको। अरे नहीं, मैंने हील करने के लिए शिफ्ट किया था इसको। Hey there! Tap! मार दिया कुत्ते का पिलोस। कुत्ते की चादर बना के लपेट के फेंक देना उसको। 3 दिन चलेगा CPL। Being too popular can be such a hassle. Who knew 8 the सालों people को would करना adore me क्या so है, much? बस 1-2 रूम कार्ड ही तो लगते हैं। फुल मैप ही बनाते हैं ना कि 4v4 जो ज़्यादा। अरे नहीं, ये लोग अपनी मर्जी चलाते हैं, जो उनको पसंद है वही करेंगे। लगेगा कुछ नहीं उनको, बस रूम ही तो बनाना होता है और क्या करना। लेकिन नहीं करेंगे ये लोग गेम्स को ज़्यादा, मोबाइल गेम्स को ज़्यादा ये नहीं करेंगे। कॉलेज वाले ऐसे ही होते हैं लोग। एटीट्यूड दिखाने का, एटीट्यूड में रहने का, ये तो दिखाएंगे ना एटीट्यूड वो लोग। मोबाइल गेम्स अलाउ नहीं करते। लास्ट टाइम कैसे अलाउ कर दिया आपको? पता नहीं लास्ट टाइम कैसे अलाउ कर दिया। हेलो तेजा, वेलकम टू द स्ट्रीम। तेजा कैसे हो? वैलो आजा। नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वैलो नहीं खेल पाऊँगी। बस ये आराम आराम से खेल रही हूँ, मैं चली जाऊँगी। आज नहीं, कल आ जाऊँगी। हाथ में भी दर्द है वैसे ज़्यादा। ऐसे ही आराम से पिल्लो रख के मस्त में बैठ के खेल रही हूँ मैं। वैलो आऊँगी ना तो स्ट्रेट बैठना पड़ेगा एकदम। Boring. Isn't there तो हम anything बाकी else क्या more करेंगे interesting कॉलेज to में? do? डांस में ले लो हिस्सा। डांस कौन सा भी कंपटीशन में ले लो, ड्राइंग में ले लो, कुछ भी ले लो, वो एक ही थोड़ी ना है। क्या करना चाहते हो बताओ? अरे वाह, नाचो बोल रही है बजा के। ये तो 3 निकले थे ना हमको। सही तो है, यहाँ तक हो जाएगा। इंक्रीज
2 कर लेंगे बस। इससे डैंड्रो डैमेज मिलेगा। फ्लोरल रिंग विल ग्रांट अपग्रेड लेवल के तक। चलो कोई ना, कर देते हैं, लेकिन इसमें डैमेज इसमें नहीं है अभी। फोर में थम कार्ड किट्टी मैक्सिमम अपग्रेड। ये C6 बढ़िया है, डैंड्रो डैमेज बहुत ज़्यादा है। चलो कर देते, बट कोई ना, हो गया। C3 हो गया। और कौन सा मिला था हमको कैरेक्टर? ये चश्मे वाली मिली थी, ये एक ही मिली थी ना, ये चश्मे वाली। डोरी पकड़ के खींचो इसको। ये 2 मिल गए थे। बढ़िया। इसका C2 कैसा है? 15 सेकेंड के लिए 20% HP बढ़ेगी। सही है। मुझे की नहीं मिली, वो वाला मिलना चाहिए था। बारबरा तो 3 है, ये भी 3। बूम 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 बूम। ये मिला है हमको? अभी नहीं मिला। कोहली मिला था। चलो इसको भी लेवल अप करना है मुझे। बंदूक चलाती है ये तो। श्यों 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 श्यों। टाटा गुड नाइट। यो हेलो मास्टर, वेलकम टू द स्ट्रीम। तो हम बाकी क्या, और किसी में मन नहीं है, जिसमें था उसी को ऐसी तैसी कर दी। बस एक ही पसंद है आपको गेम, दूसरा कुछ नहीं? तो जाने दो, क्या कर सकते हैं। 30 मिनट बाद 30 मिनट बंद कर देना स्ट्रीम, नहीं तो डांटूंगा समझी। मैं तो बंद ही कर दूंगी। जाने वाली वैसे थोड़ी देर में रह चलेंगे।
चीज चीज। अरे मुझे और 4 करने थे कल, पता है कल मुझे वो मिल जाता एक। दो दिन से तबीयत सही नहीं, क्या करें। मास्टर सुना सुना लग रहा है, कौन है मास्टर? पहले भी आए हो आप? हाँ मास्टर, आप आए हो पहले? ये चाहिए मुझे और 3। जाके पीट के आते हैं। एक बार मार सकती हूँ मैं, इसके बाद नहीं। अब अरे नहीं मार सकती मैं, 28 ही है। अल्लाह, शिट शिट बुशिट, 28 ही है मेरे पास। लोल। सो सैड। चलो क्वेस्ट स्टार्ट करते हैं, इसकी जितनी होगी इतनी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर कल करेंगे। निर्मन क्वेस्ट नहीं देख रहे हो? No worries at all. We've always valued the strength of adventurers. Given the current situation, it's vital that we all work together. स्टोरी होती है बढ़िया सी। अब इसकी स्टोरी कैसी है मुझे पता नहीं। हेलो तपन, वेलकम टू द स्ट्रीम। तपन कैसे हो? तबीयत कैसी है अभी? हाँ ठीक है, थोड़ा बेटर बेटर। Since we're facing the same enemies, वीकनेस हो रहा है थोड़ा Alright. सा, Thank you so much. बाकी ठीक है। Hi, Catherine. It's us. Got any new commission? Given how... So the Pyro Archon suggested that the Scions of the Canopy and the Adventurers ठंडे Guild ठंडे focus on पसीने आ collecting रहे and थे। disseminating once we receive word of enemy activity, we... Yes, उसके बाद अभी precisely. थोड़ा This ठीक है should अभी। also allow us to focus on gathering information rather than running around and trying to tackle everything at once. So please also take a chance to relax, you two. You've been working hard these days, and this will be a good opportunity for some well-deserved rest. So that's the plan. Whew, we can finally stop and take a break. Paimon knows that. It's not like Paimon just wanted to lay here and do आप nothing. कैसे हो? आपकी क्यूटी पाई कैसी है? The छोटी छोटी movements of नन्ही the abyss शहजादी। are always unpredictable. There have also been times when it suddenly मैं became more ठीक हूँ, active in the रेस्ट कर past. लेना। और The people here generally see it as Hydrated, something like an acute natural हाँ। disaster. 4 बॉटल लेकर Once the आए। disaster is over, everyone will return to their normal lives. We just all hope that day will be sooner rather than later. 4 बॉटल में तो कैसा दिख रहा? Oh, right. Most people have no idea just how bad the situation has gotten in the Night Kingdom. 4 बॉटल। Oh, hey, Kachina. Are you feeling better now? Yes, better better. Yep. No, really isn't time to stay at home. क्यों? And recover anyway. I wanted to do something to help. वॉइस ओवर करूँ क्या मैं इसका?
I heard that 𝙤𝙗𝘾 is getting. नहीं करूँगी मैं. हट. मैं इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है मेरी. वॉइस ओवर करूँ मैं इसके लिए. Don't think I had heard about other things. वो तो बिल्कुल क्यूटी पाई जैसी है. वो तो है ही माशाल्लाह. अभी और ज़्यादा एक्टिव है. हंसती है. हाँ ना, मज़ा आता है जब वो हंसते हैं ना बच्चे. तो जैसे ये मुंह खोल के जैसे हंसते हैं ना, इनके लिप्स ऐसे पतले से हो जाते हैं, ऐसे कड़क कड़क से हो जाते हैं. मन करता है किसी करते रहे होठ पे. Wow, so we'll finally get to meet 𝙤𝙤𝙀, the legendary forger of ancient names. ऐसे हंसते हैं still can't तो believe किस anyone लेते could forge हैं. those मन things. करता है पता है. छोटे बच्चों को लिप्स पे किस नहीं करना बोलते हैं. Hey, have some confidence in yourself, Kachina. Oh, second thought में. Maybe I will just find a hole and ground to jump into and hide for a while. Beyond. हम ये कलेक्ट कर लेंगे पहले. हमारे पास कुछ है नहीं इसके अलावा. फिर कभी भी तबीयत खराब हो सकती है तो हम ये कंप्लीट करके भाग जाएंगे. 𝙑𝙗𝘖𝙗. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. हाँ बिल्कुल. अभी तो दुर्गा पूजा में घूमने जाएगी कल. कितनी क्यूट दिखेगी ना वो. लाल लाल ड्रेस पहना के ले जाओ. नज़र का टीका भी लगा देना उसको. क्यूट क्यूट है बहुत. स्टोरी 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 स्टोरी. आर्कन यहाँ से स्टार्ट है के. आराम से स्टोरी बैठ के देखेंगे. मारा मुरी झगड़ा झुगड़ी कुछ नहीं करेंगे. आराम से स्टोरी देख के फिर जितनी हो सके उतनी स्टोरी कंप्लीट करेंगे. फिर जाके सो जाएंगे मस्त में. चिल करेंगे चिल. कोई टेंशन वाला काम नहीं करेंगे अब. हमको अंदर ही जाना है. ओ भाई साहब. Oh, Kachina! I'm so excited to meet you, Kachina. Oh, भाई साहब. पलट पलट. Hey, super amazing. I have already learned tons stuff from him. Can't watch this. Ah, yes, so I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. Hi, hi, cutie. Wait, are you Outlanders? Eyes देखो उसके. Yep, we're बिल्ली वाले travelers who eyes just नहीं लग arrived रहे in इसके. Netland not too long ago. नहीं. No, I mean, I was aware that you're travelers. It's just no one told me that you're Outlanders. Hey. You are saying that 𝙤𝙗𝘾 didn't tell you? No, the only thing she said is that a new hero had pledged himself to the plan. But we'd need to forge an ancient name to ensure he'd be able to return safe and sound. Wait. And she did mention that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, but at the time, I thought she was just commenting on my skills. But I seem to understand where the true difficulty lies now.
Oh, I wouldn't go that far. I'm used to it, really. I just need a moment to process things. The Pyro-Archon's requests are always difficult to fulfill, and we used to argue a lot. Honestly, it's probably for the better that she didn't bring this up at the time. Anyway, I can't argue with her if she isn't here, and it'd be pointless to take my anger out on someone else. But, just because I understand her rationale doesn't make me any less upset. After all, she must— It's impossible? No. As you probably know, an ancient name is a symbol of a hero's sparing glory, which grows even richer and heavier as generations of successors inherit it. We forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name. Ooh. But they were all performed outside of Netland, correct? Netland, correct? Yeah, that's right. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. Comedian To take it one लगती है step मुझे further, even कचीना. if you had performed heroic deeds कभी in that sad land, होती तो as an outlander, बहुत वो your लगती है actions बोर. still wouldn't have been recorded by our lands. Only memories and experiences that have been acknowledged by the 𝙀𝙀 can be used कितने as a टाइम की basis for है an ये ancient name. स्टोरी? Even बहुत टाइम the की होती greatest है. of craftsmen cannot create something out of thin air, you know. 2-4 That's just घंटे. how it is. Seems the 𝙀𝙀 don't want just anyone to get a name, huh? 2-4 घंटे की है. Malika, अब of ये all कितने people, should घंटे know की है better पता than नहीं. जब anyone. वो तो Yet देखा ना she's आपने, still 4 बज entrusted गए the थे. task of forging the ancient name to me. कंप्लीट करते करते. Oh, Paimon gets it. Nobody's happy being asked to do the impossible. टाइम तो लगता है इसमें, स्टोरी में. हैपन. Ugh, don't remind me. Let's just focus on how we can pull this off. How to achieve the impossible. Achieve this possible. You mean you're already willing to accept the task? Well, what else can I do? What's happened is already done, and it's not like I can outright defy the order of my Archon. If she gave me this order, then she believes the ancient name is an indispensable part of her plan, and that I'll be able to find a way to make it happen. In other words, the order is an affirmation of my abilities. Whoa, not only has she accepted the task, but now she's looking for silver linings? ओ भाई टेका लगा के नहीं बैठो बोल रहा है. उठ के आओ. See if we can't find some special way for can't make it work. The key is getting the 𝙀𝙀 to somehow acknowledge the traveler's existence and record his heroic deeds. We heard the voice of a 𝙀𝙀 when we were in the Night Kingdom before. We even had a whole conversation with her. If we can talk ये to भी her आपकी again, बिटिया maybe की we can जैसी figure है. something देखो out चुटकी. together. चुटकी है इसका नाम. देखो उंगली ऐसा करती है ना The तो every बात tribe करते has their जब own 𝙀𝙀. उंगली कतरने का How do we मन know करता है. if the one you met is indeed the छोटे best one बच्चों for को. us to talk to? Plus, considering the unprecedented nature of this situation, I have a feeling that the acknowledgement of one 𝙀𝙀 alone would probably not be enough. I don't know. That requires a level of knowledge that I do not possess. We need to find a consultant who's an expert on all things Night Kingdom and 𝙀𝙀. The first person who comes to mind is 𝙀𝙀 at the Masters of the Nightwind, the one we call Granny 𝙀𝙀. Oh, we've heard that name before. We used her spirit speaker stone to find Kachina's ancient name. A person who can make something like that must be pretty impressive. I'm unsure she'd be able to help. Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that she's constantly holed up in her room and doesn't like to be disturbed. I've heard that to get her help, you have to be extremely patient with her and know how to keep her spirit up.
इसकी म्यूजिक आ रही है, ज़िलोनन की म्यूजिक आ रही है. Huh. Why is that? I mean, didn't she already help you before? And you even managed to save Kachina. ज़िलोनन, शिलोनन भी बोल सकते हैं उसको, शिलोनन, ज़िलोनन. Yeah, at the cost of her spirit speaker stone being split into two. चुटकी मसाला लगाती है. Great going, Moika. We're already off to a Story में rocky मसाला. start here. In that case, I guess your only option is to try to emphasize that this is an important order from the Pyro Archon. Hopefully, 𝙒𝙗𝙀 would still want to show respect to the Archon. I'll also write you a letter on your behalf. If you can find someone to deliver it and mention some good things about you, then that should help too. पैरो आर्कन वो है, माविका, माविका बोलते हैं. Paimon sure hopes a Hal won't interrupt when he's माविका है talking, though. पैरो आर्कन. All right, 𝙾𝙃 is a seasoned negotiator. I trust that he'll know the best things to say. Please just give me a moment to write the letter, and we can meet up near the statue of the Seven later. Sounds good. We'll take a stroll in the meantime. Sound good. Statue 7 चलो. I'm sorry to put this on you, 𝙾𝙃. It's just that you're probably the only person इसकी who भी knows how आवाज to नहीं deal डाली with her. इन्होंने, 𝙾𝙃 की. ये तो बात करता है, मोटी जैसी आवाज इसकी है, इसकी आवाज क्यों नहीं डाली? Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? Right. She mentioned there are 6 heroes and that 𝙭𝙀𝙀 is one of 4 that have already been acknowledged. Oh, well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having companions walk by your side is perhaps the best solace when facing such a bleak reality. इसकी वॉइस नहीं डाला इसने. है इसकी वॉइस फिर भी. कोई नहीं मिला क्या इसको वॉइस ओवर करने के लिए? पहले ही सर पे से चले जाता और ऊपर से इसने वॉइस भी नहीं डाली है. मज़ा ख़राब कर दिया. ला 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 ला. 𝙒𝙗𝙀 knows him too? Given how the Masters of the Nightwind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. I've never met Auroran, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. Makes sense. But Paimon wonders how 𝙒𝙗𝙀 could be the first one to notice Auroran's disappearance if she spends the whole day in her room.
अबे बे 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 कितना स्वीट बोल रही है। Whether join the fourth variant of this mask. Italy probably a girl. Plan to use this leverage when I get to talk with So her. if I'm following, you mean we'll help her investigate Roron and the captain's whereabouts? Idea. Yeah! Plus, we kinda owe her one anyway to make up for breaking the spirit speakers down. This is a pretty well thought out plan, as expected of 𝙒𝙀𝘾𝙃. Then, yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope 𝙒𝙖𝙧𝙀𝘼 can meet at the stadium in 2 days. Okay, then let's part ways for now. I'll see you in a couple of days. Oh. Wait. मौज तो ऊपर रख लेके बैठी वेट आंटी। इसको मॉर्निंग करना है अपने को, स्टोरी स्टार्ट करना है। अरे होने ही नहीं दिया मैंने। टक 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 हो गई मॉर्निंग। अरे डे आफ्टर टुमारो बोल रहा है। सॉरी। कब तक जा रही मून? चली जाऊंगी थोड़ी देर से, जब तक मुझे ठीक लगा तब तक बैठूंगी, फिर उसके बाद चली जाऊंगी बस। अरे क्या किया मैंने? एक मॉर्निंग तो किया था, 2 बार नहीं घुमाया क्या मैंने? क्या हो रहा है मेरे दिमाग के साथ? घुमाया तो था ना मैंने, एक बार किया मॉर्निंग, फिर उसके बाद घुमाया एक बार। La 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 la। अब मुझे गुस्सा आ रही है। एक ये दो घुमा दी 2 बार तेरी तो। Tea parties are a must for the well-mannered.
If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. क्या हो गया? क्यों नहीं हो रहा ये? अर्ली मॉर्निंग नहीं करना है शायद. Oh, it's time to meet up with Shilonen. अर्ली मॉर्निंग नहीं करना था. सही है. डे आफ्टर टुमारो करते जा रही हूँ मैं. सही है, सही है, सही है, सही है, सही है. मॉर्निंग करना था, अर्ली मॉर्निंग नहीं करना था. अरे इधर से ही रास्ता, इधर से ही रास्ता. Hey Shilonen, how's everything going? अरे तपन मैंने ना Hi, वो Traveler and Paimon. एक गेम बताई है. Bad news. 𝙤𝙤 did not reply to our request. आप भी Although I कर लो suppose I'm डाउनलोड. not too surprised. Huh? स्टीम You पे mean है she वो didn't even गेम. bother to give Kenichi a response? Guess she really... Yeah, well, she can be also quite eccentric, though वो she's one of the गेम most का gifted people नाम around. Even the Masters of the Night Wind often struggle to work with her. My guess is that she probably has अच्छी other गेम है. reasons for not 8 लोग deigning us मिलके with a खेल सकते response. हैं हम लोग. Only up with friend बोल के है स्टीम पर. But let's go to the stadium and see if we can meet her there. If we do get a chance to talk to her in person, we can still try to work something out. That's true. Let's go! पैसा पैसा. तो ये भी चाहिए मुझे. इसकी ग्राइंडिंग नहीं की मैंने. करके रखना था. थोड़ी सी की मैंने बाद में. ला 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 अरे इसकी स्टोरी चल रही. इसको रखते हैं ना स्टोरी में. Paimon doesn't see anybody. क्लाइंबिंग Seems ऊपर she's just not क्लाइंबिंग gonna करती show है ना up, ऊपर. huh? क्लाइंबिंग. Well, we tried to be as considerate as we could, but she's under no obligation to help. That might be true, but this is still a request from the Pyro Archon, right? Shouldn't the subject always answer the call of their Archon? A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier between us and her. The only thing is that she often has very high expectations of us. Huh. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down to earth and easy to get along with. वो तो Not है. like the old hag Granny 𝙤𝙤𝘼𝙧, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? ओ भाई आ रही हूँ. नहीं जा रही. You all talk about her like she's some kind of huge deal, but she didn't even वो bother है to ये reply to दूसरी our है. letter. Seriously, माविका if है she ये didn't दूसरी want है. to come, she could at दूसरी least लग let रही है. us know. If
that's what aging does to you, Paimon never wants to get old. Oh, really? So, that's how you see me? Huh? Who's ये there? कौन है? Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Come on, relax. I'm sure my— Huh? 𝙤𝙧𝙀𝙀. सिलोली? Wait, you're 𝙤𝙧𝙀𝙀? You're Granny 𝙤𝙀𝙀𝙀? Yes, Granny 𝙤𝙀𝙀𝙀. But emphasis on 𝙤𝙀𝙀𝙀, not Granny. Not Granny. You must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Oh, wipe that look off your face! You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any makeup. नाक किधर है? ऐसा ये makeup ऐसा करी बुड्ढों के She's जैसा. called Granny, but she's actually pretty young. It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. I'm sorry. So, how old are you actually? What? How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her age? Paimon really didn't mean to offend you, it's just that your case seems really unique. क्या है पायमन? Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. It was my idea to invite you here, 𝙤𝙧𝙀𝙀. So if you're upset, you can just take it out on me. सिलोली. All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no need to take all this so seriously. If anything, I'm gonna feel awkward if we keep this going. I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, "Understood." Besides, just showing up is the most important part, no? But, of course, makeup ऐसे it's लगा ली also बुड्ढों natural की for तरह. people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me. Awkward नहीं. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. Only to hear you all talking smack about me. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. What's with that expression? Was she feeling embarrassed just now? She's waiting for the cat.
session. Everything is saying like a joke, but I'm not sure it should. Rude left. Rude, not left. When the Masters of the Night Wind said they struggled dealing with her. क्या comedian है भाई? She seems to be pretty बोलती awkward बात को herself. खत्म नहीं Everything कर रही है, she जाने के बाद does बोल and रही है says फिर. seems a little forced. Rude, not left. Anyway, 𝙤𝙤𝙀, I heard that you require my help in crafting an 𝙤𝙤𝙀. ancient name. Correct. The situation isn't like anything we've handled before. Let me explain. I see. So 𝙤𝙀𝘽𝑒 has asked you to forge an ancient name for an Outlander. Well, that would be a first. And you've also heard all about Auroron. I must say, he's always been a good kid. I can't see him joining the Fatui of his own volition. He must have been coerced somehow. Yeah, that's what we came here to ask you. We'll help bring Auroron back if you help us solve the problems of forging the ancient name. What do you think? I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me take a good look at you. Good looking, yo. Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Yet again and again, you've braved them to find new worlds. O weary yet free soul, even the most verdant leaf in the forest will pray for your happiness and safe passage. Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Huh? Don't move. There's something here. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the Traveler gonna be okay? Shoo! That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last of them. Isn't that kinda like having part of a ghost come back with you? It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind, and generally worsen your mood. Well, in that case, better to get rid of them. It was nothing. 𝙤𝙤𝙀, let's follow your proposal. Once you've brought Auroron back, I'll take you to see the Lord of the Night. The Lord of the Night? But don't we need to talk to the 𝙤𝙀 of the tribes? Something this important is beyond their jurisdiction. Only the Lord of the Night can decide whether we can grant an ancient name to one who does not hail from our lands. The Lord of the Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom, constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the 𝙤𝙀 of the tribes. Well, that sort of makes sense, being the lord of the entire Night Kingdom and all. Not exactly. It's not so much that one's more powerful than the other. But never mind.
That's not important. It would take too much time to explain. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. In other words, in a dream. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I'll make a list. Can any of you get everything for me? I can go. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local vendors. Sounds good. Then we'll go with St. Lolly to track down Auroron. Phew, the 𝙤𝙤 are nothing to scoff at, so please, be careful during your investigation. If you need any help, just come find me. Yep, we'll be sure to play it safe. All right, now it's time for us to catch that brat and bring him back. Oh, I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroron's place to look for clues. He has always lived alone, and I found a broken jar in his house. There was also something off about his phlogiston aphids, which I assume is because their keeper has been gone for quite some time. And interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. My guess is they were left by 𝙙𝙤𝙣 arms. Oh, sounds like the 𝙤𝙤 broke into his house and took him hostage. But why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only in his 20s. What would they want with him? That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan, he must have done something to attract their attention. In any case, we'll get to the bottom of this once we manage to get him back here. I'm truly sorry to put you two through all this trouble with me. But please help me get him back. You can count on us! All right, then let's start by heading to where Auroron was seen last. This is the spot. An eyewitness claimed to have seen Auroron speaking to some 𝙤𝙤 soldiers here. I don't know how much you're willing to believe me, but Auroron really is a good kid. I see no reason why he'd suddenly get involved with the 𝙤𝙤. I'm convinced that what the witnesses saw was actually the 𝙤𝙤 coercing him, or perhaps trying to extract information. However, I doubt anyone would believe me, given there are no signs of a fight. Didn't 𝙤𝙤 say that she's a big name in Natlan? Feels kinda weird to see her so frustrated and helpless like this. Auroron? Well, he was left at the side of the road as an infant, and the people of the tribe took him in. You could say that everyone had a hand in raising him.
He learned a lot from us. And once he reached adulthood, he built himself a house out in the countryside. He spends most of his days growing vegetables and raising aphids, living off of what he harvests from the garden. He's always been such a good kid. He would even get his friends to deliver whole bags of fresh produce to my place. Oh well, let's keep looking. He can answer all of our questions once we find him. He's been raising phlogiston aphids for a long time, and since they were disturbed, they secreted a special type of phlogiston. We can use that substance to track his movements. Let's follow the phlogiston trail. Huh? What trail? Paimon doesn't see anything. Oh, right. I forgot your eyes don't naturally perceive such things. Here, give me your hand. How about now? What do you see? Whoa, Paimon can see it now too! That's right. I used a spell to temporarily transfer a portion of my senses to you. For a short while, you'll be able to see the phlogiston too. Wow, you can even share your senses with us? First time Paimon's heard anything like that. It requires a very rare spell that most people aren't adept at. But don't worry, it's a cinch for me. Between the two of you, it seems the Traveler's senses are a bit stronger than Paimon's. When I held your hand just now, I could sense that you've got a great affinity for phlogiston. You're extraordinarily gifted. Anyway, we'll need to use our vision now to track down Auroron. Good luck, you two. Over here, this way! 𝙤𝙦 might say a lot of deep and confusing stuff, but this spell of hers is really something. What was that? Oh, Paimon was just complimenting you. What does she mean by deep and confusing? As far as elderly shamans go, I'd say that I'm already pretty easy to talk to. Is there any other old hag who's as fluent in the language of the youth as me? But is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried my best to match their speech patterns. But given the looks on their faces just now, or perhaps I'm still not fashionable enough? But that can't be, right? Don't tell me they're still getting the impression that I'm super old-fashioned. Huh? Was that 𝙤𝙦's voice? Now that I think about it, it's a good thing I found some helpers this time. Some things are best done with the help of friends. Oh? They appear to be feeling quite confident. Looks like our work will go smoothly.
treasure hunt. Ah. Hey, looks like there's a new camp over there. Let's go take a look. That little brat. Yep. Judging by Paimon's experience as a guide, it definitely looks like people set up camp here. Wait. The phlogiston here is a bit odd. Let me see. Paimon sees a small shape here. Could it be some sort of symbol? This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. Only someone from our tribe would recognize it. So Auroron was indeed being threatened. We've got to find him. Fast! Leaving such a subtle mark implies that he was trying to be discreet. In other words, he was probably under the Fatui's watch. If they notice us, we can just charge in and fight them to the death. But what if my darling grandson is also there? I can't have him caught in the crossfire. No, I've got to be careful. Otherwise he'd get hit as well. How annoying. No, I've got to stay calm and keep my composure. There are traces of people staying here too. Wait a second. The phlogiston around here is jumbled up. I can also smell a mix of elements in the air. Pyro, electro, and some other elements as well. 𝙤𝙤 told us that you were super amazing. No wonder you can sense so many more things than us. It's about time that little brat said something nice about me. There are signs of a struggle here. Judging from what's left on the scene, there must have been a fight. But after that, the factions seem to have gone their separate ways. Both the phlogiston and the elemental traces in the air support that. Do you still remember the little mark we found before? Paimon's thinking, what if Auroron wanted to leave another distress signal, but was caught by the Fatui? Given there are two signals leading from here, we should split up as well. I'll take this direction, and leave the other one to you. Let's meet up again later. Auroron, what the heck were you doing? It's one thing to trouble me, but now I had to bring other people into this as well. You little brat. And off she goes! Traveler, did you hear all of that as well? Once 𝙤𝙤 left, that voice went away as well. Paimon even tried calling her name inside Paimon's head, but there was no response.
So you were thinking the same thing. Paimon also thought that if we could hear what she was thinking, then she could probably also hear what we were thinking in our heads. She did say that she was quite adept at this spell, and it doesn't sound like she's had any trouble with it in the past. Huh, maybe we're a special case and can hear her thoughts as a side effect. If you think about it, she's really got a lively inner world. It paints quite a different picture from Paimon's first impression of her. Paimon sees some traces here. Let's follow them and see if we can find anything up ahead. Did you find something? Huh. So we can't tell where Auroron might have gone from here. That's weird. The phlogiston trail suddenly stops. We can't make anything of these footprints either. But he can't have just evaporated into thin air, right? We know he wasn't alone. He had all those Fatui with him. So, you can hear the sounds of the wind from beneath the earth. I'm very sorry, but please do not move. I have no desire to hurt you. I apologize that our first meeting has to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears that perk up as soon as it senses danger in their environment. And given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere else in the world. However, you're now in the Night Kingdom, a familiar domain to the masters of the Night Wind. Hello, traveler. I'm Auroron, the one you've been searching for. Ah, the Fatui's custody. I see. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. I'm afraid you've been brought here by a lie, like a false omen in the lingering smoke. My friend and I only left those traces to lure you here. Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most feasible way for us to set up a meeting. Greetings, traveler from afar. Be careful with this traveler. His soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. It's taking all my concentration to hold on to him. It was I who tasked Auroron with leaving the traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul to the Night Kingdom. I've heard much about you from the past encounters you've had with my colleagues. Given the present situation in Natlan, I would like to sincerely request a formal meeting with you, in person. I will use the opportunity to explain my goals and motivations to you.
as well as why I mistrust 𝙁𝙁𝘆𝙀𝑐, the Pyro Archon. I believe there is little reason for you to blindly follow her plan. If you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. But remember, not a word of this to anyone. I would like to avoid any further conflict. You will see me again once you return to reality. No matter what I say, please, help me keep this a secret. This is all to avoid dragging Granny into this conflict. Hey, what happened just now? You suddenly collapsed and stopped responding! Hey, why are you sitting on the ground? Are you okay? 𝙤𝙦! He froze for a moment and then just collapsed to the ground! Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain anywhere? Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. But had I known you were feeling unwell, I wouldn't have taken you on this trip with me. If you're feeling sick, you should just say so. 𝙤𝙦 should be able to, exorcise any ghosts or weird stuff that you picked up in the Night Kingdom.